Yes, sir. Okay, fine. All right. So the question is, जो iteration हमने करनी है, वो कब करनी है, basically. Yes, sir. So क्या हमें water line 4 पे करनी है या किसी और water line पे भी करनी है? That's what your question is, correct? Yes, sir. Correct, sir. So basically, uh, uh, we have to do the correct this thing whenever the P is very large. That means it's whenever the P is more than 300, then we have to do it. Now, for a size of a hinge ship, which is roughly 15,000 tonner or 18,000 tonner. So if her displacement is when she's fully loaded, her displacement is about 18,500, right? So when a vessel is fully loaded, that time or when she's at her max draft, not fully loaded, I'll say, when she's at her 18,000 draft, then we will do it. But when she's on a light ship and she's, let's say, 10,000, then we don't do it because the P which will come out. So basically, you see the P, how large is the P, and then you decide. Let me just do today's question and then I'll answer this better. Then it will become more clearer to you. It will all sound part. So let me do today's question, then I'll answer this. Okay? Okay, sir. Yes, sir. Is that okay? Let me just do today's question, then I'll answer this question. Your Yes, sir. question Yes, after sir. this. Yeah. Okay, Any sir. other doubt? Okay. हाँ, So सर. let's. सर एक ये और था सर. हाँ जी. सर ये जो मेन रेस का कॉन्सेप्ट है, तो मतलब जैसे लास्ट लास्ट में मेरे को लास्ट में जो अपना राइड किया था अपन ने, तो उसमें बेसिकली दिस ऑल दिस डाटा आर नॉट चेंजिंग. सो इन दिस शेप, सो ये डाटा सब चेंज कर रहे हैं केएम, तो मतलब ये उसका इफेक्ट कंपनसेट कर दे रहा है मेन रेस का बेसिकली. अदरवाइज नहीं तो इफ दिस डाटा का कांस्टेंट, तो अपने को मीन रेट निकालना पड़ता है इसमें. जैसे आपने बताया था कि अगर Correct. इसमें लिखा हो इफ डाटा रिमेन्स कांस्टेंट एंड डू नॉट यूज उस मतलब रिपीटिशन नहीं करना, तो मतलब फिर अपन को मीन रेट से करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा नहीं उसे. नहीं 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 नहीं. I didn't say mean rise से करो. I didn't use this No, no, sentence. I'm asking, sir. I just said hinship mean rise is only to be done in A-ship questions. Okay, sir. Mean rise is only done there. In hinship we don't do mean rise. Why we don't do mean rise? Because the hydrostatic draft takes care of the mean rise, right? So we find the displacement, we find the P. The initial displacement minus the P gives me the final virtual displacement. Corresponding to that is the hydrostatic draft. Now this hydrostatic draft has taken care of the mean rise, right? Yeah, okay, sir. So वो उसमें embed हो गया basically. So in Hinship we don't use it Yes, sir. unless in Hinship there is a fall in waterline question. तब कहानी अलग हो जाएगी, वो उसको अलग बाद में डिस्कस करेंगे. अभी नहीं कर रहा मैं उसको डिस्कस. So अभी for the time being in Hinship we do not use mean rise for the time being. Okay, sir. So that's done in A ship. इसलिए हमने A ship को पहले खत्म कर लिया अलग से. इसका प्रोसीजर ये है, इसका प्रोसीजर ही अलग है. इसमें खाली P है और P की आइट्रेशन है एंड W इनिशियल माइनस P के कॉरेस्पॉन्डिंग KM1 है और वो KM1 हम यूज करते हैं. यहाँ पे ये Okay, sir. कहानी है. But हाँ सर, बट इसमें लिखा था ना इफ डाटा रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब व्हाट ऑल आइटम्स विल रिमेन कांस्टेंट लाइक केएम, तो अपने को चेंज होगा ही केएम अपना. इनिशियल इनिशियल क्वेश्चंस में KM अपन ने ए चेंज शिप होगा. में किया तो उसमें तो केएम सेम था, और इसमें तो केएम चेंज होगा अपना. तो इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा, मतलब कौन कौन सा डाटा कांस्टेंट किसमें रहेगा मतलब.
किसमें किसमें मतलब जिसमें अपने को एशियप में फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप में जो मतलब अपने को उसमें के लिए वो चेंज नहीं करना पड़ेगा, मतलब ये रिपीटेशन नहीं करना चाहिए पड़ेगा एक साइकिल का। एमसीटीसी अच्छा, एलसीएफ। एलसी तो सर इनिशियल निकल जाएगा ना एक बार तो। आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछो, बताओ मुझे, फिर से बताओ। हाँ, तो जैसे इफ डाटा रिमेन्स कांस्टेंट डू नॉट यूज द रिपीटेशन ऑफ साइकिल, सो व्हाट आर द लाइक डाटा क्या रहेगा उसमें जो मतलब वो कांस्टेंट लेके चलना है क्वेश्चन में, नहीं चलना है कि हाँ कि ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि इन एवरी स्टेज में सर साइड डाटा चेंज हो रहा है अपना ना। P remains constant. P does not change. ओके सर। सर डाटा रिमेन्स Iteration. कांस्टेंट में तो केम भी कांस्टेंट रहेगा ना सर, उसमें उसमें तो केम भी जो इनिशियल केम देते थे वही तो वी आर यूजिंग दैट सेम केम थ्रू आउट द क्वेश्चन। या लेकिन अगर आरजीएम ढूंढना है तो विल यू व्हाट विल यू फाइंड आउट? विल यू फाइंड आउट आरजीएम फ्लूइड और विल यू फाइंड आउट आरजीएम वन फ्लूइड? सर आरजीएम वन निकालेंगे उसके लिए। That's the point which I'm coming to. Will you find out RGM fluid or will you find out RGM1 fluid? You'll find out RGM1 fluid, na? So basically, P, you do not do iteration, essentially. For the time being, let's just stop at that. We'll come back to all this discussion again. एक बारी जब मैं हिंडशिप का ड्राई डॉकिंग खत्म कर दूंगा ना, उसके बाद ये डिस्कशन करते हैं, अभी मत करो, अभी पार्शियल पे चल ओके रहे हो, बिकॉज अभी हमारी फ्लोटेशन पार्शियल है। एक बारी हिंडशिप के ड्राई डॉकिंग खत्म होने दो, उसके बाद में डिस्कशन करते हैं। देन लेट्स थ्रेड बेयर इट, then you will be able to understand me better, because then whatever I'll be speaking, we'll be on the same page. ठीक है? Is that okay? यस सर। Any other doubt? In yesterday's question, वो फॉल समझ आ गया कैसे करना है फॉल का, फॉल इन वाटर लाइन? यस सर। और क्या था कल? सो यस्टरडे हमने 3 किया था, 4 किया था, वाटर लाइन 3 किया था, वाटर लाइन 4 किया था, एंड फॉल किया था, करेक्ट? यस सर। ओके। यस सर। अच्छा, कल के क्वेश्चन में सपोजिंग मैं आपको बोलता find out the initial draft forward and aft with which she entered the dock, तो कैसे निकालते? कैसे निकालते in yesterday's question? इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, इनिशियल ट्रिम दी हुई है, तो क्या उससे हम सर वो टीसी दे रखी है हमें, एलसीएफ वो एलसीएफ निकाल लेंगे, फिर वो टीसी इज इक्वल वो टीए इज इक्वल टू टीसी इनटू एलसीएफ बाई एलवीपी कर देंगे, और डब्ल्यू जो इतना है उसका तो इनिशियल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट आ ही जाएगा, तो उसमें सर वो दोनों टीए टीएफ लगा देंगे। अब खाली बस एक ही चीज का ख्याल रखना, ये हिंडशिप में टीसी यूज नहीं होता, टीएम यूज होता है, ट्रिम। ट्रिम चेंज नहीं यूज होता है हिंडशिप में, ये याद रखना है। तो वो प्रिंसिपल एरर गिना जाता है उस स्टेप का।
So it will be TA is equal to trim TM into LCF upon LBP. तो ये TA आ जाएगा. TF will be equal to trim minus TA. तो TF और TA आ गया. डिस्प्लेसमेंट से हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट निकाल ली. इस हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट में माइनस TF और प्लस TA कर दिया. ये आपके फाइनल, ये आपके ड्राफ्ट फॉरवर्ड एंड आफ्ट हो गए, जिससे आप डॉक में एंटर किए. गॉट इट? Is that okay? Okay, sir. All right. So let us come to question number 96. Question number 96. MV hinge ship is floating at a displacement of, so W initial, 18,820. अब ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गई है. ओके, शी इज ऑलमोस्ट फुली लोडेड नाउ. 7.728. FSC is 0.092. सर ये आप TS क्या लिखते हो? 818820 टन, वो TS सोल्ट वाटर. टन्स टन्स टन्स. अच्छा अच्छा. ओके, इसको ऐसे करते. चलो, दिस ओके. टन्स. Okay, calculate the maximum trim by stern. Calculate the maximum trim by stern allowable. So मुझे trim चाहिए initial by stern to ensure that a VGM of at least 0.3 meters. VGM of 0.3 meters on taking the blocks forward and aft. कौन सी waterline की बात हो रही है? Waterline number 4. 3. A VGM of at least 0.3 meters on taking the blocks fore and aft. Sir, 3. 3 की सर. 3 की बात हो रही है. All right. 3. Everybody is okay with this? 3 की बात हो रही है. Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे 0.3 चाहिए. तो सबसे पहले तो जो मेरे को कोई और डेटा नहीं है, तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ये है. तो इस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल सारी चीजें निकाल लो. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस डिस्प्लेसमेंट. मुझे इनिशियल MCTC चाहिए. मुझे इनिशियल LCF चाहिए. मुझे इनिशियल KM चाहिए. मुझे इनिशियल हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट चाहिए. So I'll just pick up the values from the book only. So MCTC is 210.47. LCF is 69.836. KM is 8.371. Hydrostatic draft is 8.905. ये मेरा इनिशियल डेटा है. ठीक है, इज दैट ओके? और मुझे वाटरलाइन 3 पे जाना है और मुझे VGM 0.3 चाहिए उस वाटरलाइन पे. सो लेट मी बिगिन. KM is 8.371 minus kg 7.728 gives me GM solid. कितना आता है?
0.6. 643. 0.643. Okay. 0.643 minus FSC minus 0.092 gives me GM fluid. ये कितना आता है? 0.551. 0.551. This is my GM fluid. Now, with which I have entered the dock. The VGM which is required is 0.3. So I start with formula number 3. GM fluid minus V loss is equal to VGM. So GM fluid 0.551 minus V loss. VGM required is 0.3 meters. Therefore, V loss is equal to 0.251 meters. The V loss is 0.251. यहां तक ओके है? यस सर। ओके। अब मैं फॉर्मूला नंबर 3 से फॉर्मूला नंबर 2 में जा रहा हूं। सो V loss is equal to P into Km1 upon W initial. So 0.251 is equal to P into, अब Km1 तो मेरे पास है ही नहीं. Got it? Unknown, unknown. Two unknowns, same equation. So I will use whatever Km is available to me, and that will give me an approximate P. And mind you, I am at waterline 3 right now. तो कल हम 4 पे थे, उल्टा चल रहे थे, आज हम 3 पे उल्टा चल रहे हैं. Get the difference or get the similarity? यस सर। Okay. So I don't have a Km1, but I have a Km. So I'll use whatever Km is available to me. 8.371 upon W initial. 18,820. Get the P. Cross multiply. 564.308. 564.308. So many tons. Now, this P will be an approximate P. Why? Because the Km that I've used is an approximate Km. Agreed? Yes, sir. यस So I have to do one cycle of iteration to obtain a more accurate P1. And once I obtain P1, I will stop. So let me change the color of my pen. I'm doing one cycle of iteration to obtain more accurate
P1. So W1 is equal to W initial minus P is equal to 18,820 minus 564.3 is equal to 18255.7. So many tons. Now, corresponding to this fellow, I will find out the data. So, I will now find out MCTC1. I will find out LCF1. I will find out KM1. So, picking up the values from the book, for this displacement, W1, MCTC1 is 207.083. LCF1 is 70.011 and KM1 is 8.33 meters. So I start my iteration process. That means यहां से मैं शुरू कर रहा हूं KM से और ये पूरा साइकिल जो है ये वाला जितना भी है सबको रिपीट करूंगा मैं ये सारे के सारे को तो यहां से शुरू कर रहा हूं इसको डुप्लीकेशन करता हुआ जाऊंगा माइनस kg 728 will give me GM1 solid कितना आता है 0.602 0.602 ओके अब GM सॉलिड आ गया अब FSC1 तो FSC1 is equal to FSC into W initial upon W1 FSC is 0.092 into 18,820 upon 18,255.7 ये कितना आता है 0.095, sir. 0.095. Mind you, FSC into W initial is FSM. Solid minus FSC will give me GM1 fluid. 0.602 minus this will give me what? 507. 0.507. सो मैंने ये स्टेप कर लिया अब मैं इधर आ रहा हूं इस स्टेप पे सो GM1 fluid is so much the VGM which is required is 0.3 meters subtract किया so the V loss permissible will be equal to 0.207 meters ये स्टेप पे आ गया मैं ये करता करता इज दिस ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके अब मैं इस स्टेप पे जा रहा हूं नाउ आई एम गोइंग हियर 0.207 is equal to P1 into KM1 8.33
upon W initial 18,820. Is this okay with everybody? सर इसमें W इनिशियल यूज करेंगे? वो तो मेरा बेसिक फॉर्मूला है, उसको तो मैं बदल नहीं सकता, इसलिए मैं बार बार उसको इनिशियल लिखता जा रहा हूं. मेरा फॉर्मूला नंबर 2 इज दिस, करेक्ट? वी लॉस के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर इज ऑलवेज W इनिशियल, प्लीज रिमेंबर दैट, हमेशा. इज दैट ओके? यस सर. ओके. सो P1 467 decimal 7. This is the more accurate P, and therefore I draw a line after this so that I don't proceed further. Now, what do I have to find out? I have to find out the trim. So I go to formula number 1 of P3. So what is my formula? P is equal to TC into MCTC upon LCF, correct? Agreed? Yes sir. Yes, sir. Okay. So which P am I using? P1. So which MCTC will I use? MCTC1, LCF1. So therefore, सर इस 467. फॉर्मूले में टीसी की जगह हम लिखने में टीएम लिखेंगे ना, ट्रिम लिखेंगे? नहीं, ये तो अब फॉर्मूले को मत, ड्राई डॉकिंग के फॉर्मूले को मत बदलो. ये तो ड्राई डॉकिंग की बातें हो रही थी, वो बातें नॉन ड्राई डॉकिंग की बातें कर रहे थे हम. नहीं सर, आपने इनिशियली कहा था ना कि हिंदशिप में टीसी यूज करेंगे, तो वो ब्लंडर हो गया. नहीं, मैं बात कर रहा था ड्राफ्ट्स जब निकालने होते हैं ना, हाइड्रोस्टैटिक ड्राफ्ट से जब ड्राफ्ट निकालते हैं उसमें टीसी नहीं यूज करते हैं. ओके सर. So 467.7 is equal to TC in centimeters into MCTC1 207.083 upon LCF1 70.011. So TC in centimeters is equal to how much? $158.12. 1.58. 158.1, so many centimeters. This is the trim change required for waterline number 3. Therefore, initial trim will also be equal to the same, will be equal to 1.581 meters by stern. This is the trim with which she will enter the dock. हाँ जी. सर अभी फिर दोबारा इस पी के लिए दोबारा डब्ल्यू निकाल के नहीं सर, एमसीटीसी और एलसीएफ निकालेंगे इस फॉर्मूला में? अगर मैं आपसे पूछता कि व्हाट इज द ड्राफ्ट रिक्वायर्ड, मुझे तो ड्राफ्ट मैंने पूछा ही नहीं आपसे, अभी आगे आके पूछूंगा. तो व्हाट विल बी द ड्राफ्ट? W initial minus P1.
will give me W2. Yes, sir. Corresponding to that W2 will be the hydrostatic draft. Yes, sir. That will be my draft forward and aft Yes, at sir. waterline number 3. ठीक है? Is that okay? Okay. All right. Initial trim is so much. Now, the next part. At this maximum trim, find her draft forward and aft on entering the dry dock. कौन सी वाटर लाइन की बात हो रही है? 1 1 की बात हो 1 रही है. sir. All right. So इस ट्रिम पे मैं जब डॉक पे एंटर करूंगा तो TA मेरा क्या होगा? अब इसकी मैं बात कर रहा था. ट्रिम, यहां पे TC नहीं चलेगा. इंटू LCF अपॉन LBP. अब इनिशियल बातें चल रही हैं. 1 की बात हो रही है. इनिशियल ट्रिम 1.581 मीटर. इनिशियल LCF 69.836 upon 143.16. This will give me the TA. 0.771. This is the TA. Therefore, TF will be equal to trim minus TA. That is 1.581 minus 0.771 is equal to 810. 0.810 meter. So therefore, my original hydrostatic draft was 8.905. इसमें मेरी स्टर्न ट्रिम है तो माइनस TF कर दूंगा और प्लस TA कर दूंगा. And I will get my draft forward and aft. 8.905 forward, 8.905 aft, minus TF 0.810 plus TA 0.771 will give me draft forward and aft. Draft forward 8.095. Draft aft 9.676. सो इस ड्राफ्ट पे मैं डॉक में एंटर करूंगा एट वाटर लाइन नंबर 1. ठीक है? इज दैट ओके? हाँ जी. एनी डाउट सो फार? ओके. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. Find the draft forward and aft
on taking blocks all over. So W initial minus P1, 18,820 minus 467.7 will give me the W2, which is the virtual displacement, 18352.3. Corresponding to this fellow, find out the hydrostatic draft. So picking up the value from the book, this will come as equal to 8.712. What will be the draft forward and aft? This will be the draft forward. This will be the draft aft also. This will also be the dock water height at waterline number 3. Agreed? Yes, sir. Okay. Now, I'm asking you the next one. Tell me the fall in waterline during the critical period. Think very carefully. Fall in waterline during critical period. कौन सी waterline की बातें हो रही हैं? Number 2. During critical period. 2 and 3. 2 and 3. बिल्कुल 2 and 3, sir. 2 and 3. ठीक है. 2 and 3. 3 पे तो ये वाला होगा. डॉक वाटर हाइट एट 3. 2 पे क्या होगा? सर ये इनिशियल ऑफ ड्राफ्ट के बराबर. करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. इनिशियल ड्राफ्ट आफ्ट. ये समझ में आया कि नहीं? आ गया. ये हमने करा हुआ है जो जब वाटर लाइंस कर रहे थे, जब ए शेप कर रहे थे. ये क्रिटिकल पीरियड स्टार्ट्स व्हेन द वाटर लाइन becomes equal to the aft draft. The dock water height is equal to the aft draft. तो ये ड्राफ्ट आफ्ट क्या है? 9.676. डॉक वाटर हाइट एट 3 क्या है? 8.712. दोनों का डिफरेंस. अब इसमें मैं पूछ सकता हूं, फ्रॉम वाटर लाइन 3, supposing the dry dock decides the vessel has to sail out, how much of dock water needs to be pumped in for the vessel to float off? हाँ जी. Remember, rise of tide required for her to refloat. Is that okay? Yes, sir. Got that. Okay. So now answering your question. हाँ जी नमित बोलो.
You've raised your hands. Hello, sir. Okay. So now asking you that original question which you had asked me. Okay, how do we know when to do the iteration in a question if it's not written anywhere? तो बेसिक या किस वाटर लाइन पे करते हैं या किस पे नहीं करते हैं. तो बेसिकली इफ यू आर गोइंग फ्रॉम initial water line, initial condition, straight to 3, and the question is asking you find out the RGM at 3. So in that case, you are directly going to be using the formula P into Km1. You will start with that only ना, TC से शुरू करोगे, उससे P3 निकलेगा. तो P3 की वैल्यू आपके पास है, तो therefore you will directly find out V loss is equal to P3 into Km upon W initial, and you will find out the and Km आपकी initial use करोगे, P आपके पास already है, तो V loss निकल जाएगा, फिर RGM निकल जाएगा. That means you are going from seeing the sequence of formulas 1, 2, 3. Then you will not use it. But if you are going from sequence of formula from 3 to 1 backward, that means VGM दिया हुआ है और उल्टा जा रहे हो, तो P भी अननोन है और Km1 भी अननोन है, दोनों अननोन है, तो यूज करोगे. So that is how to distinguish. ठीक है. यस सर. एंड सर ये जो वाटर लाइन 2.5 पे जो अपने मतलब फॉर्मूला लिखाया था, अगर पूछा गया तो मतलब अगर वो हिंशिप में आ गया तो वही यूज करना पड़ेगा. वो यूज करना पड़ेगा ना. तो वो यूज करना पड़ेगा. सो P अपॉन TPC प्लस P इंटू LCF स्क्वायर या GF स्क्वायर व्हाटएवर दिस थिंग. बट इसमें GF यूज नहीं होता, तो इसलिए उसको मिस मत करो. LCF स्क्वायर अपॉन MCTC इंटू LVP इज इक्वल टू फॉल इन वाटर लाइन, तो फिर वही यूज करना पड़ेगा. So this finishes off your Hinship dry docking. Now you can practice any question from the past papers of Hinship dry docking. Practice शुरू कर सकते हो आप. The only thing which is remaining with you now is Hinship grounding. That I will do tomorrow. But other than Hinship grounding, now you can attack past papers any question. अब शुरू कर सकते हो आप. Then फिर जो difficulties आएंगी, we'll discuss that in class. ठीक है? Is that okay? आज का जो क्वेश्चन किया है उसको एक बारी सीक्वेंसिंग फिर से कर लेना. एक बारी कैसे किया है, कहाँ कहाँ पे हमने वन यूज की, स्टेज 1 मतलब वो जो जिसको हम आइट्रेशन वाली स्टेज कह रहे हैं, तो आइट्रेशन कैसे कर रहे हैं. ठीक है? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So that is that. So these questions take time. ये बहुत लेंदी हो जाते हैं ये, तो इसमें से इसके कई पार्ट्स कट जाएंगे when they come. बट कई बार इंटायरिटी में आए हुए हैं क्वेश्चंस हिंशिप के, so they take time. मतलब they tedious, लेंदी हो जाते हैं बड़े. मतलब 30 मिनट तो लगते हैं इसको करने में, और मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ब्राइट हैं, तो इसलिए धीरे धीरे आराम आराम से करना पड़ता है इसको. करेक्ट? ऑल राइट, चलो लेट्स स्टॉप हियर. ओके. Okay, sir. All right. So okay, see you.